published so many books, popular articles, training manual, e-publication. The institute has also developing seed and planting material that is very much required for the productivity gain, and we talk over the increase of farmers' income. We have developed 17 tons of paddy seed. This is of breeder and honestly pulse seed that is a major strength of this institute. We have 2 pulse seed hub, one at our own center Patna and one at Buxar. And last year we have produced 36 ton of pulse seed, that is chickpea, lentil and pigeon pea. And we are also producing vegetable seed. Last year we produced 3 tons of vegetable seed, mushroom spawn, makhana seed, and we are also developing the planting materials of fruits and flowers. Last year we produced and sold 60,000. Last 1 year, I think many things has to do, and we have to work hard for the betterment of the farmers. And again, I welcome you all who are present either in physical or virtual mode. And at last but not least, I want to say, सबका हार्दिक अभिनंदन. धन्यवाद. Thanks a lot, sir. And now, may I request Dr. A.K. Thakur, sir, Director, Extension Education, Bihar Animal Sciences University, Patna, for his brief address to this ICAR-RCER panel. Please, sir. सबसे पहले मैं इस सभागार में इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में पधारे हुए हमारे आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बिहार पुष्प विज्ञान विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर रामेश्वर शिक्षक का इस अवसर पर धन्यवाद अभी विराज रहे हमारे डायरेक्टर अटारी ICAR अटारी डॉक्टर अनिल कुमार जी, डॉक्टर केजी मंडल जो महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में अभी निदेशक के पद पर हैं, और हमारे इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर उज्जवल कुमार जी, और वर्चुअल बोर्ड में इससे जुड़े हुए हमारे डीडी जी डॉक्टर चौधरी जी और एडीजी डॉक्टर भास्कर जी, और एवं अन्य गणमान्य डिग्निटरी जो ICAR से जुड़े हुए हैं, एवं अन्य संस्थानों के निदेशक भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल बोर्ड से जुड़े हुए हैं। उन सबों का मैं इस अवसर पर विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ। और हमारे इस संस्थान के जितने विभागाध्यक्ष एवं अधिकारी एवं वैज्ञानिक इस सभागार में उपस्थित हैं, हमारे किसान प्रतिनिधि, हमारे कौशल्या फाउंडेशन के डॉक्टर कौशलेंद्र जी, इन सबों को मैं हृदय से इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और सभी को मैं ICAR के इस मांगलिक बेला में जबकि हम 22वां 22nd डे मना रहे हैं फाउंडेशन डे, इस अवसर पर सबों को मैं हृदय से मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं दे रहा हूं, ताकि इस संस्थान दिनानुदिन और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, और खासकर जो ईस्टर्न रीजन में जो इनका मैंडेट है, इस दिशा में कृषि को और आगे ले जाने में अपनी कारगर भूमिका निभाए। खासकर बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में इनका हेडक्वार्टर स्थित होने के कारण बिहार की विशेष अपेक्षा इस संस्थान से है, और हमारे बिहार के जितने भी किसान बंधु हैं उन सबों की आशा और अपेक्षा पर इस संस्थान खड़ा उतरा है। और न केवल रिसर्च शोध की दुनिया में, बल्कि प्रसार
शिक्षा जगत में भी इसने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इसके लिए मैं इन संस्थान के सभी वैज्ञानिक और इसका नेतृत्व प्रदान कर रहे हमारे उज्जवल कुमार जी को हृदय से बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी इनके नेतृत्व में ये संस्थान और आगे प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा और न केवल अनुसंधान, कृषि प्रसार एवं इस क्षेत्र में बल्कि आने वाले समय में जो चुनौतियां एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आ रही हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, इस पर एक मॉडल और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पर जो काम हुआ है यहाँ, इसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। जो भी डिग्निटरीज पटना आते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट विजिट करते हैं, वो यहाँ जरूर आते हैं देखने के लिए और उससे काफी इंस्पायर्ड होते हैं। और हम लोग को, हम बगल में जो संस्थान यहाँ पर हैं, जैसे खासकर बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, वाल्मीकि है, एवं पोटैटो रिसर्च का एवं अटारी का हेडक्वार्टर भी, अटारी का पटना रीजन का भी बिल्डिंग अब तैयार है, उसका भी कार्यालय यहाँ से काम करना प्रारंभ कर दिया है। तो इन सभी संस्थानों के बीच एक कारगर समन्वय और आपस में तालमेल बिठाकर हम बिहार के किसानों की और अधिक सेवा कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और हम सब इसमें एक समन्वित प्रयास करते हुए एक ठोस कार्यक्रम ऐसा बनाए जिसमें डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स नहीं हो, एक ही दिशा में सब लोग अग्रसर हों और सब लोग एक, यदि प्रसार की रणनीति बने तो उसमें हम सब भागीदार हों और सब अपने सभी स्टेक होल्डर्स अपनी अहम भूमिका एक मिले जुले प्रयास से बनाए तो उसका ज्यादा इफेक्ट, टेंजिबल इफेक्ट नजर आएगा छोटे कम समय पे। यदि हम सभी विभिन्न दिशाओं में अनुसंधान और प्रसार शिक्षा के कार्य को करेंगे तो शायद उसका असर उतना प्रभावी नहीं होगा। तो हमारा अपना मानना है कि यहाँ पर सौभाग्य हम लोगों का कि ICAR-RCER का ऑफिस यहाँ पर हेडक्वार्टर और हमारे बीच में इसी आसपास में ज्वाइनिंग एरिया में बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सब एक दूसरे से तालमेल बिठाए। BAU का भी एक यहाँ पर रीजनल स्टेशन है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, और हम लोग तो है ही बिहार साइंस यूनिवर्सिटी, तो हम सब अपने रिसर्च में, अपने एक्सटेंशन एक्टिविटीज में एक मिली जुली कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर तालमेल बिठाकर हम लोग और बिहार के, खासकर हमारी अपेक्षा तो है कि बिहार के जो किसान है वो ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हों। हालांकि इसका मैंडेट तो पूरा ईस्टर्न रीजन है और झारखंड में भी इसने काफी अच्छा काम किया है। तो हमारा अपना मानना है कि हम आने वाले समय में हम इस संस्थान को और शिखर पर देखना चाहते हैं, विकास के शिखर पर, जहाँ की एक झंडा गाड़े कि भाई ये केवल एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ही नहीं है बल्कि यहाँ के किसानों के हर चीज, हर दृष्टिकोण से हम लोग उसको प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं ऐसा। और बिहार सरकार की भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। अभी एक मीटिंग में हम लोग थे तो वहां पर डायरेक्टर फिशरीज बहुत सारे प्रोजेक्ट इसको दे रहे हैं कि भाई आप ईस्टर्न रीजन ICAR प्रोजेक्ट ले, तो बिहार सरकार अभी खुले इससे मदद करने के लिए तैयार है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ICAR से तो जो भी फंडिंग हो रही है तो हम लोग, और हमारे यूनिवर्सिटी में भी काफी अपेक्षाएं हैं कि जब बगल में संस्थान है तो खास करके लाइव स्टॉक और फिशरी में जो हम लोग इंटीग्रेटेड एफर्ट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ एकेडमिक एक्टिविटीज में भी हम लोगों ने MOU साइन किया है कि बिहार साइंस यूनिवर्सिटी और ICAR-RCER मिलकर समन्वित प्रयास करते हुए किसानों के, खासकर पशुपालकों के जीवन और उनके आमदनी में, उनके रोजगार को बढ़ाने में और हम लोग अपना अहम भूमिका निभा सकें। हम इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि बहुत सारे इसमें हमारे अभी मंचासीन मान्य जो हमारे, जो उनको बोलने का अवसर मिले, हम इसलिए संक्षेप में ही अपनी बात रखते हुए और इस संस्थान की उपलब्धियों पर विशेष रूप से हमारे डायरेक्टर उज्जवल कुमार जी ने बड़े विस्तार से प्रकाश डाला है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। और मैं आप सबों को पुनः एक बार हृदय से बधाई देते हुए और इस फाउंडेशन डे के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी दी हुई शुभकामनाओं के लिए हम अनुग्रहित हैं और
Now I request Dr. K.G. Bandal, sir, Director, ICAR, Mahatma Gandhi Integrated Farming System Research Institute, Motihari, for his brief address. Thank you. Most respected Vice Chancellor Dr. Ramesh Singh sir, respected our DDG sir Dr. S.K. Chaudhary in absentia, respected ADG sir Dr. Bhaskar ji, maybe he is online, and the Foundation Day lecture to be given by Professor Triloknath Singh ji, Director IIT Patna, maybe he is also online. Our respected Dr. Anjani Kumar ji, Director Attorney Patna, Dr. A.K. Thakur ji, Director Extension Bihar Animal Sciences University Patna, respected Dr. Ujjwal Kumar ji, Director of this prestigious institute, and many directors of NRL and other institutes who are online, many listeners who are online, and most importantly, the scientists, technical staff, administration, finance, supporting staff of this institute. I express here profuse thanks to the director, Dr. Ujjwal Kumar ji, for his invitation on this special day as a special guest. So, thank you, Dr. for your invitation. And at the same time, I would like to extend my hearty congratulations to the director and his full team of this institute, as well as the previous directors and the previous researchers, previous staffs, previous technical persons who are associated with this university, this institute. Foundation Day is a very special day for any institute, any organization, because it is equivalent to, means it's a birthday of this institute, like birthday of any individual. So it's a very happy day. It's a day when we share our happiness to all of you, all of us, all the people surrounding us. So it's a very happy day. So I am also very happy to be with you on this special occasion. Now, question is the existence of this institute. 22 years means 21 years have passed. You have very glorious history of your achievements, as Honorable Director has presented, and the so many building an institute is not an individual's job. It is the effort, it is the labor which is required to build one institute. But you have done it, and for that, so many thanks and the acknowledgement. As I belong to NRM Institute, I am also extending thanks, and on behalf of you, the previous all pioneer directors and all the persons who have led this institute at the front and who has guided all of you, even previous employees, previous scientists, previous staff, to build this institute. It is the day when we cherish the glorious
glorious past, as you have seen. How that past is glorious? Because you have a lot of achievements, scientific inventions, technology development. There are a lot of awards and accolades you have achieved. That indicates, I know many of you, many friends are sitting here, they have received, they are recipient of many awards and honors, recognitions. That indicates that the institute is going in the right direction. They have done very good, notable works in the past, but we should not be belonging to the NRM division. Myself, from the starting of my career, I belong to NRM division. I know there are several difficulties being a NRM scientist, so called. So I will tell some of the, जैसे हमारा आदरणीय डीडीजी सर बोलते हैं, हम लोग गाइड करते हैं डिफरेंट मीटिंग्स, बोलते हैं कि मैं 3 बिंदु बताएंगे. तो पहला बिंदु ये है, सेकंड बिंदु ये है, थर्ड बिंदु ये. बहुत अच्छा जो है हम लोगों को सुनने में लगता है. गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर solution to any problems. So a lot of thanks and gratitude I am conveying on my behalf, as well as because I feel that this is our institute, this is my institute. As a sister institute of the NRM, we have to strengthen the NRM research. We have to develop technologies. So from that angle, I am telling you that the able guidance and leadership at the headquarters in the NRM division, it is exemplary. And the way our DDG sir, ADG sir, they are guiding us, they are making the complex things, complex issues in a simpler way. So we at the other end, it is very easy to implement all those ideas and solutions. So today is the moment when we should say profuse thanks to our honorable DDG and ADG. Now question is, we are cherishing this particular day, we are cherishing the glorious past of more than 2 decades. But at the same time, this is the day when we should think for the challenges. What are the challenges ahead with respect to natural resource management, science and technology? NRM itself, so I will tell you, 3 बिंदु मैं आप लोगों को बताएंगे. As I have learned from our DDG sir, the way he tells, that way I am trying to say, not that bindu. First thing is, as I was telling, I belong to NRM division since beginning. So really it is difficult for the NRM scientists to get the works recognized. Because our NRM science, technologies and inventions or the refinement of the technologies is not very easy to establish. Like variety, like breed development, like other plant protection, chemical development or plant protection, material development or nanotechnology or something. It is really very difficult, and particularly some of the NRM aspects is very difficult. People may think that what is the science behind this, but it is not always true. If 10% advantage is there, that is also an achievement. So first thing is, but still what I was telling, Pehla Bindu is NRM technologies, in my feeling, should be little bit more precise and acceptable, little bit more effective. It
should not be left very loosely. Whatever achievements we are having, we have to do it in an acceptable manner. So that is, there lies the challenge, how those technologies can be brought to the farmers in an acceptable manner. Second window, technologies or the works, research efforts should be, we always tell, problem solving. Yes, this is the era, this is time when, of course, there will be basic and strategic component. From basic understanding, strategies are formulated, and from strategies, the applied science, applied aspect starts. So application is required, that is the end point. So, but main thing is there are problems which are multiple. Multiple problems are coming up over time. I'm not going into details of all those, what are the multiple challenges. But our effort should be problem solving as well as we have to think for the future. Anticipated problems. If it happens, what is the solution? If this happens, what is the solution? So anticipated problem solving approach we should also think of. It is the collective responsibility, not any individual, any discipline can do that. For that, collaboration and the integration of different organizations and experts will be required. And lastly, another thing is the establishing somewhat stronger linkages with the farmers, stakeholders, and the recipients of the technology. Because I feel nowadays we are working for the farmers and we are going to the farmers field in different programs. But somehow it is my feeling solely that somewhere that links between the organization, scientists, and farmers need to be strengthened little more than what is existing. Sometimes it happens that some of the technologies are evolved by the farmers, designed by the farmers. Without hesitation, in my opinion, we researchers, we should accept that. Some of the technologies which are prevailing need some blending. So our window should be open for the farmers to blend all those technologies with the recent advances, so that greater benefit should go to the farmers and stakeholders and the policymakers. So ये 3 बिंदु मेरा कहने का था. NRM technologies should be, repeating again, should be more effective and precise. Problem solving current and future problems, and more linkages, stronger linkages with the farmers. और इसके साथ मैं अपना को विराम देता हूं. रिसर्च कॉम्प्लेक्स का जो एम्प्लॉइज है, स्टाफ है, स्टार्टिंग फ्रॉम सपोर्टिंग स्टाफ टू डायरेक्टर, सबको मेरा तरफ से कांग्रेचुलेशन और सबको मेरा शुभ दिन में, खुशी का दिन में सबको मैं पुनः बधाई देता हूँ. धन्यवाद. बहुत धन्यवाद सर. You rightly said that able guidance and leadership are the key factors for getting higher achievements and recognition, and the points NRM technology to be made acceptable for farmers as well as linkages between farmers and scientists to be more strengthened so that our farmers as well as stakeholders can take more profit. These are very useful points for we people. Thanks a lot, sir. And now I request
Dr. Anjani Kumar sir, Director ICAR-RCER, Patna, for his blessings. Thank you, sir. आज 22 फरवरी 2022 को 22वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित समूह को मेरा नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, एडीजी डॉक्टर भास्कर जी, ICAR-RCER के डायरेक्टर डॉक्टर केजी मंडल जी, इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर उज्ज्वल कुमार जी, निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर ए.के. ठाकुर जी, IIT के डायरेक्टर डॉक्टर त्रिलोकनाथ सिंह जी, आज इस प्रोग्राम से जुड़े हुए सभी अन्य निदेशकगण, इस परिसर के सभी वैज्ञानिक, अधिकारी एवं कर्मचारी, सबों को मैं आज इस शुभ अवसर पर अपनी तरफ से आप सबको बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। अभी डॉक्टर उज्ज्वल जी बता रहे थे इस संस्थान की उपलब्धियां। निश्चित रूप से बहुत सारी टेक्नोलॉजी के मामले में उपलब्धियां हुई हैं, किसानों तक पहुंची भी हैं, लेकिन जरूरत है तकनीक को और किसान तक पहुंचे, और उसके लिए इस संस्थान के पास एक अपना मैकेनिज्म है। आपके पास रीजनल स्टेशन है, 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो काफी इफेक्टिव होते हैं किसी भी तकनीक को किसान तक या दूसरे स्टेक होल्डर तक पहुंचाने के लिए। और मैं समझता हूं कि इसमें आपको काफी सहायता भी मिलती है एक्सटेंशन प्रोफेशनल के द्वारा। अभी जैसा कि 21 वर्ष हो गए, 22वां मना रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से और भी हमारे जो पूर्व निदेशक या पूर्व हमारे वैज्ञानिक स्टाफ रहे होंगे, उनका योगदान रहा है, और आने वाले दिनों में जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। हम देख रहे हैं कि जैसे बात जलवायु परिवर्तन की बात है या नेचुरल रिसोर्स हमारे डिप्लीट कर रहे हैं और किसानों के एक्सपेक्टेशन बढ़ रहे हैं, तो हम कैसे अपनी तकनीक और इजाद करें कि किसानों की जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करने में हम सहायक हो सकें और इस संस्थान की गरिमा को हम आगे बढ़ा सकें। इसके लिए भी हमें और प्रयत्न करने की जरूरत है। जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं सरकार की पॉलिसी भी आती है बीच में। अभी आपने देखा है कि इसी वर्ष नेचुरल फार्मिंग पे काफी फोकस किया गया है। हम जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन नेचुरल फार्मिंग को भी हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। अब उसमें भी रिसर्च करने की जरूरत है। तो इन सब चीजों को साथ लेके हमें चलना है। जो सरकार की नीति है, जो हमारे रिसर्च के अपने पैमाने हैं और किसानों की जो आशाएं हैं, इन सबको एक साथ मिला के हम किस तरह आगे बढ़ सकें, इस पे सोचने की जरूरत है। हम सबको साथ मिलकर चलने की जरूरत है। ये इन संस्थान एक ऐसा है जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, सभी डिसिप्लिन के आदमी हैं और उनको एक साथ मिलकर रिसर्च करने से हम शायद कुछ ज्यादा अच्छा लेके आएंगे। मुझे याद है आज से 15 साल पहले, 14-15 साल पहले एक नेशनल सेमिनार में हमारे डीजी साहब थे डॉक्टर मंगला राय जी, उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि स्थिति ये है वैज्ञानिकों की, यदि एक पेड़ सूख रहा है उनसे आप कहो तो एग्रोनॉमिस्ट कहेगा कि कहीं मैनेजमेंट में कमी रह गई इसलिए सूख गया। सॉइल वाले अपनी बात कहेंगे, प्रोटेक्शन वाले अपनी बात कहेंगे, लेकिन जब हम साथ मिलके वहां जाएंगे देखेंगे तो उसका जो भी कारण रहा है वो तुरंत पता चल जाएगा। तो जरूरत है साथ चलने की। जो जितने भी हमारे डिसिप्लिन है
मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ चलें तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। और मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरा भी आरएसी चल रहा है और मैं उज्ज्वल जी के कहने पर आया हूँ। मैंने कहा था कि मुझे समय नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आज आप लोगों से मैं यही उम्मीद करूंगा, यही विश्वास रखता हूँ कि जो भी टेक्नोलॉजी आगे आने वाली है या आई हुई है वो किसान तक पहुंचे, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य किसान है और हम उससे किसान को जितना भी हो सके फायदा दे सकें, इसी आशा के साथ मैं एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर हम हृदय से आभारी हैं कि आरएससी होने के बावजूद आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इस संस्थान के जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर आप आए, सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ एडीजी डॉक्टर एस भास्कर जुड़े हुए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट डॉक्टर एस भास्कर सर, एडीजी ICAR New Delhi, for shower his blessing on this auspicious occasion. Please, sir. Good morning. Thank you very much. Respected Chief Guest, Dr. Rameshwar Singh Saab, Honorable Vice Chancellor, Bihar Animal Science University, Patna, and today's special guest, and who will be delivering the foundation day lecture, Dr. Professor Triloknath Singh Ji, Director IIT Patna, and the directors, two directors, Satari Director Dr. Anjani Kumar and Dr. Mandal Ji from MG Free Motihari, and other directors are also joined, particularly Jayesh Mishra is there from DWR Jabalpur, and my colleague, friend, director, Dr. Ujjwal Kumar, and many of other, and Dr. S.D. Pandey, NSC and Lichi is also there, and KVK Buxer has joined, and maybe other Ramgar also might have joined. And scientific, technical, and administrative and supporting staff of this institute of ICR Research Complex for Eastern Region, Patna. I am very happy to join on this special occasion, and I congratulate the staff of all on this occasion. And I should also highlight the contribution of this institute so far. Everybody knows that Eastern region comprises, particularly this institute has been carved to cater to the needs of the plains of Assam, Bihar, Chhattisgarh, Eastern Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha, and West Bengal. And all these states together as a geographical area of 32% and supporting population of 34%. It is not a small population. 34% of 135 crores is it amounts to around nearly 50 crores or 60 crores of the people population. But one thing, two contradictions what we find in this region is that it is endowed with very good natural resources in terms of soil fertility, water resources, solar radiation. The productivity and per capita income of the farmers is very, very low when you compare to the national level or any other region in the country. And particularly what I don't know, in many, if you see the world also, West is always developed, East is always underdeveloped or the developing. When you come to the India also, the West is well developed and East is also the underdeveloped or developing. So maybe I don't know what is the reason for this, but it is true also to some extent. And I have also compared this in East, the Karnataka, my own state. The western part is rich, whereas the eastern part, I am coming from eastern drought area. We are all from the middle class farm community with facing a lot of
problems there also. Our groundwater has gone to 1,200, 1,400 feet in Kolar district itself. And we are almost drawing a water which is rich in so many fluorine and other heavy metals also. That's the kind of situation there. But still, the country looks at this eastern region different, with a different outlook. And the main problems in this region is the population explosion is one thing. And very recently, I think Anjani Kumar and Mandal were also making a mention about the climate change, its variability. Therefore, it is causing climate variations in this region. And third is land degradation is also happening. And because of the even today land reforms or the land ownership rights are there, still a lot of problem in this Bihar. This is another socio-economic problem. And small and scattered holdings, lack of quality seed and planting materials, and poor extension mechanism. Of course, Vijay Kumar represents the division, and even Rameshwar Singh is also from the extension division, I suppose. So poor extension mechanisms, they also list that for this. But country has got a lot of hope on this region. We see that it has got a potential to become, to usher in second green revolution in the country. If at all, if there is any productivity has to come in agricultural sector, it has to from the eastern region. So ICAR research complex for eastern region has come into existence on this day, that is 22nd February in 2001, by merging three different institutes of the constituents of ICAR itself. One is Directorate of Water Management Research, and earlier it has got its own research. It was there in Nahuri, then shifted to Orissa, then came to the Patna. Of course, our DDG is not there today. He was part of this institute. And second is the Central Horticulture Research Station, Experimentation Ranchi, and it was part of the Indian Institute of Horticulture Research, Sargata, in Bangalore, where I served from 1990 to 1999. And people used to say that if you do something, we will be transferred to Ranchi or Godhra in Goja. And all those things. I remember Ranchi from this. So that is another aspect. So third is the Central Tobacco Research Station. Of course, I don't know what is the area, extent of area and all those things. In the time, Puza, it was also merged with this complex. And on 16th October 2006, the entire research complex has been dedicated to Indian farming community, the sweet memory of Babu Jagjivan Ramji. And then I think probably the agriculture, he was in his memory, it was decided to dedicate mainly to address the diverse issues that are related to resource management, mainly resource management. And of course, crop husbandry is there, horticulture is there, aquatic crops is there, fishery is there, livestock is, so many things are there. And the ICAR research complex, since it is having many sectors, and we need to go conduct research on many sectors, it is a multi-commodity institute, I can say that, and it is a multidisciplinary institutional framework to address the problems of the eastern region. And main mandate, of course, we have to transform the low productivity, high potential eastern region into high productivity region. That is the main mandate of this institute through conducting strategic and adaptive research for efficient integrated management of natural resources, and through utilization of seasonally waterlogged and perennial water bodies for multiple uses of water. And we should also need to promote the network of and consortia research in the eastern region, based combining all our NARS establishment in that region. That is the main mandate of this. Of course, to achieve this mandate, our institute is, I am very happy, they are involved in facilitating and promoting coordination and dissemination of appropriate technologies, and they are providing scientific leadership to impart training, vocational training, advanced training to promote agriculture in this region. And it is also acting as a repository for all the available information of this region. And it is collaborating with relevant national and international institutes in liaison with the state also, as well as central government departments
for dissemination of technology. Of course, lot many technologies have already gone into the field developed by this institute. And I'm going to make a brief mention about that because Dr. Ujjwal Kumar has already mentioned what are the main achievements of this institute. This thing. And mission is also in line with the mandate of this institute. We have to tap the unutilized potential of vast, seasonally waterlogged or perennial waters and all those things, particularly for production purposes. So of course, infrastructure, if you still look at the infrastructure, of course, it is scattered. That is the one problem I have found out in this thing. In Patna itself, we have got 3 main farms. One is that Patna is having 65 acres. Maybe unfortunate on part of the institute, but fortunate from the point of Bihar people, Bihar public. I look from that angle. Part of it is being taken for the extension of the airport. So second thing is Sabajpur. Of course, it is 12 kilometers away from the institute, to which we can shift some of the activities. I think when I visited very recently, I have made a mention about that. Sabajpura is one alternative things. And of course, we are also liaising with the state government to give us alternative land in lieu of this. And another farm is also there. It's a very small farm, 11-acre farm in Fulwari Sharif. Of course, we are also using it for seed production and other purposes now. Apart from this, we are having a very big campus at Ranchi, 425, 426 acres. And Makana, of course, it's gaining a lot of importance. And very recently, a high power committee has been constituted to strengthen the research at Makana because of there are so many VIP references. Every time, at least one question is there on the Makana because it is geotagged, and it is also going to become it is considered as a super specialty food across the metros. And even it is selling at a very high price in Delhi and other places. In Bangalore, it is not available. And whatever Ujjwal Kumar has gifted me another day 1 kilo, I gave it to one of the VIPs in Bangalore. He, VIP told that it is not available in Bangalore. So that is a kind of demand is there for Makana. Of course, we need to map the areas in all these water plus ecologies for Makana production wherever possible and all those things. And so the institute has got very good laboratories, and many of them are having very good high-tech laboratories. Of course, our scientists, both on the field as well as the laboratory, they are working day and night. Of course, during Corona also, they have achieved a lot. And I appreciate them for their contribution. Actually, when I visited very recently, again, a lot of more activities has been very much impressive to look at the progress made on the ground. And they're coming out with very high-rated publications, particularly in field crop research and all those things. And I think J.S. Mishra is also in this platform. He can guide further the scientists, is second-line scientist there to publish much more articles in the high-rated journals. Coming to this, of course, the 90 scientists, it's a very big institute. Of course, it is establishment in Ranchi and Makana also. And very recently, we have finalized the cadre, technical cadre also. We are giving as a protocol, as a rule guideline, we are giving 1:1. At least for 90 scientists, we will give 90 technical cadre also. That has also been finalized. And the new initiatives which Ujjwal Kumar has mentioned, it's very good, and it is need of the day, rather, soil organic carbon management. Whatever may be the interventions, NRM interventions, either through conservation agriculture or through some other methods. Even Anjali Kumar was mentioning about natural farming. I was just thinking that, and even some of the pockets may be very good for natural farming. If you see the area in the Ranchi areas or the coal mine areas and all those things. So there, I think we can still think of going for the natural farming the systems. So then major achievements, of course, he has mentioned here and there so many things, and I don't need to touch upon the same things. Of course, Swarna Sukadan having a potential of 3.5 to 4 tons of rice variety.
It's already there in the farmer's field. And we institute also has produced 1.5 quintals of quality seed and distributed in the Unnat Dan biofortified varieties of stock of the nation now. Even the Honorable Prime Minister has mentioned and dedicated so many varieties to the nation. Of course, we need to come out with many more such biofortified varieties, mainly to increase the nutritional security of this eastern region, particularly Bihar. So many other things also he has listed, and he has also mentioned about this. I don't want to think. Another thing is which is catching at a national level is the implementation of the DBT project, Biotech Kisan Hub in aspirational districts. Because aspirational districts, of course, it is catchy thing now. And what are the 4 districts of Jharkhand and 3 districts of Bihar? If they are doing it, I really appreciate their efforts in this direction. And upscalings, there are so many things here. There are things to mention. Climate resilient agriculture program in 10 villages, and climate resilient farming systems we are expanding in 4 villages of East Champaran district, and another 5 villages. The outreach activities 22 villages, and ASRP and goat improvement, they are doing it in 5 villages and 5 districts. And Makana cultivation, that is one thing I have already mentioned, that is 111 blocks they are already earmarked in 11 districts of the Bihar. And I think under one district, one program also, many of districts are identified with the Makana itself. And there is a lot of scope with collaboration with the IIT Patna and the BASU, that is Bihar Animal Science University also. We can make further progress in these things. There is, of course, the scientists are very dynamic there, and they are also very innovative. And whatever the national goals are there or regional goals are there, they should be fulfilled. And I congratulate them. And once again, I wish them all the best on this occasion. And I expect that they are going to stand up to the expectations of the country today. And it's a very special day for them. Let them celebrate and let them enjoy. I will also congratulate in advance the scientists who are going to get some awards on this foundation day, all those things. Thank you very much for giving me an opportunity. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for your blessings. And now I would like to request Dr. S.K. Chaudhary, DDG NRM, for his blessings. Good morning, ladies and gentlemen. Namaste. Sab logon ko pranam. Today, at the occasion of 22nd Foundation Day of ICAR Research Complex for Eastern Region, Patna, I sincerely wish each one of you a very, very happy Foundation Day of the Institute. And I hope that like this 22 years, many more years to come, and the Institute shines and Institute makes consistent progress. Today, we have Dr. Rameshwar Singh Ji, the Honorable Vice Chancellor of Bihar Animal Science University, Patna, as chief guest. Also, Dr. Trilok Nath Singh, the Director of Indian Institute of Technology, Patna. My own colleague from the Council, Dr. Surya Narayana Bhaskar, the ADG AAFCC. Dr. Anjani Kumar, the Director of Atari, Patna. And Dr. KG Mandal, the Director of Mahatma Gandhi Integrated Farming Research Institute, Motihari. And I also see that many directors of various institutes, not only from Bihar, but also from the other states, they have joined. Scientists of ICAR Research Complex, Patna, the Atari, the MGIFRI, the CPR station, and all the staff members of the Research Complex, Patna. Various officials from
government departments, government of Bihar, government of India as well, and also the field functionaries from various line departments and media person present on the occasion of 22nd Foundation Day of this institute. On behalf of Indian College of Agricultural Research, I sincerely congratulate each one of you. When we celebrate our successes, we learn from our failures, and also we see and have retrospection where required to be strengthened further, and what are the areas wherein we require capacity building and capacity development. At this point in time, since I'm not present in Patna, I'm giving my message from New Delhi. I congratulate all those who will be getting awards very soon for their consistent hard work, and the institute is going to recognize their efforts and claims they have made during the last 1 year. During the last year, there are so many good things which have happened in the institute, many technical and scientific achievements. I don't want to repeat them. Director will make presentation or he will explain those things in his talk. But some of the good achievements are the Swarna Sukhadhan and Swarna Unnat Dhan. These are the varieties which are developed. The Swarna Sukhadhan with high zinc content and high iron content. Also, it has a potential to produce up to 4 tons per hectare of food grain, rice grains. And this is already released through the state variety committee. And also Swarna Unnat Dhan, which is further improvement in irrigated ecology with a yield potential which can be as high as 5.5 tons per hectare. The power bin varieties, Swarna Suraksha and Swarna Gaurav, these are having less anti-nutritional factors. And these varieties are biofortified, and they are also released through Central Variety Release Committee. In the area of resource endowment or climate resilient millet-based production system, the diversification of rice wheat with the millet-based system is really a wonderful work which was done by the institute, and it has the potential to reduce the carbon footprints and also reduced energy. The millet-based production systems like sorghum or pearl millet or chickpea, reducing the carbon input by more than 150%. And it improves the energy efficiency by more than 50% compared to cereal-based systems. So these are some nutri-cereals and some millets and some other cereals wherein the Eastern India can really bank upon, and there is a possibility of diversification with this. And also in aquatic production system, the promising cultivar was of thornless water chestnut. But this is the institute where we are working on water chestnut, and also alocasia and sweet flag. These are integrated with the makhana, and these are the requirements of the native population, and local livelihood can be supported with this kind of intervention. And this diversification option is the way forward for future agricultural research in Bihar and such kind of wetland ecologies. The institute also busy in developing the resource endowment, and also they are characterizing natural resource base of Eastern India and mapping flood and flood prone ecologies in Eastern India and devising the management strategies. Another area which is important for the whole Eastern region is going for betterment of this rice fallow system. How to best utilize this 12 million hectare area, which is presently as fallow. If you convert this rice fallow fully, then probably Eastern India or Eastern region
will be a great potential zone for India in the agricultural sector. The red Purnia cattle in indigenous population, the cattle, the red Purnia cattle and Maithili duck in collaboration with ICAR-RCER have been registered, and these are the descript now. So many non-descript populations are there, and the institute is busy in finding out the profiles and preparing them and sending them to NBAGR Karnal and registering them as a new. Institute was also instrumental in creating the FPOs. In 4 states, Institute has done very good work, and Institute has identified and established 7 new FPOs. And in technology demonstration area or capacity building area, Institute is consistently working hard. The scope of upscaling of climate resilient agriculture and the way Bihar government is coming forward for the climate resilient agriculture program is wonderful. And Institute is providing full support to that, particularly in Gaya and Buxar districts. Also, the climate resilient farming systems in East Chambal districts and integrated farming system in different villages. The Institute has its own outreach activities, and it has a center of AICRP on goat improvement, and they are working on this line. The Darbhanga Center of Makhana cultivation, it requires strengthening, and we are at ICAR headquarters trying to find out ways and means how best we can support this center, and we can convert this center as a center of excellence in Makhana. At present, there are some constraints in the institute, I would say, the manpower, and also we are will be really in trouble when we'll be losing our 21 hectares of land where we are located at present. And we are searching for some alternate land for this. And if we get then probably it will be a very good thing, because we are conducting research here for last more than 2 decades now. And during this period, a lot of good things have happened, and these all good things are for the betterment of entire eastern region. Therefore, my sincere request to the state government officials, and we are pursuing very hard from this side. Honorable Secretary Dare and BGICR is consistently in touch with and writing to the authorities in Bihar to provide the alternative land for the research purpose. I hope again with new energy and new enthusiasm, we will start research in the other location where we'll be doing wonderful things, be it conservation agriculture, be it diversification, be it the indigenous cattle and indigenous breeds conservation, also registration of them, some good work in fisheries sector, some good work in poultry sector. The research complex has to cater to the needs of whole eastern region, more so developing capacities, developing skills, and providing better opportunities to young entrepreneurs in this area is also one of the motto of this center, this research institute there. And I believe in coming years, the institute will be doing much better than what we have been done this year. Last 2 pandemic years have really slowed down the progress of many institutes, but now it is time to further energize ourselves and address and cater the needs of this region fully. There are so many difficult challenges, because flood and flood-prone ecology is a big challenge. We need to have a very definite plan for managing the flooded zones of this area, and also better and sustainable soil management practices, and providing better input so that the soil organic carbon and soil microbial biodiversity be maintained properly. So my best wishes once again on the occasion of this 22nd Foundation Day, and I'm pretty sure that next time we will meet, that time some better achievements will be there for celebration. And मैं स्टाफ के सभी लोगों को, चाहे छोटे कर्मचारी हो चाहे बड़े कर्मचारी हो, आज इस अवसर पर बहुत हार्दिक बधाई देता हूं
और आशा करता हूं कि आने वाले समय में और अच्छा काम होगा। उन्हें एक बार उन सब लोगों को जिनको अवार्ड मिलने वाला है मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, और जब कभी भी अगली बार वहाँ आना होगा, मुलाकात होगी, तब और विस्तार से चर्चा करेंगे। और पुनः एक बार आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आशीर्वचनों के लिए। और अब गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। और अब समय है फाउंडेशन डे लेक्चर सुनने का। ये लेक्चर जो है प्रोफेसर त्रिलोकनाथ सिंह, जो डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के हैं, वो देंगे। और इससे पहले कि उनका लेक्चर हो, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगी। Dr. Triloknath Singh, he is presently Director IIT Patna, Institute Geosciences Chair Professor and Professor Indian Institute of Technology Bombay. He has got several specialization on rock mechanics, slope stability, underground space technology, mining, blasting and soft computing. And he is PhD in rock mechanics IIT from the IIT BHU Varanasi. He was Vice Chancellor in Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth Varanasi, and for a very short period he was Vice Chancellor in VBS University Jaunpur, UP. He is recipient of several awards like Lifetime Achievement Award by NEEM International Foundation in the year 2019, Excellence of Teaching Award from IIT Bombay in the year 2017. He has got several Best Paper Awards and first PM Bose Mineral Award. He is also recipient of this award in the year 2009. He has more than 342 referred journals he has referred, and he has edited 3 books, 115 conference proceedings, 28 book chapters, 20 popular scientific articles, and he has a huge citation, that is total 9,260. So give him a big applause for that. And member of several national committees also. He is member of several professional societies. And his major scientific contribution of national importance is National Network Project for Kedarnath, Rishikesh, National Highway 54, and he is handled stability investigation and rockfall assessment along Mumbai-Pune Expressway, geotechnical investigations and monitoring of Amiyan landslide Kumaon. Then he gave suggestions on the suitability of stone for making of Lord Buddha tallest statue at Kausambi. He gave advices for suitability of footing for NTPC power transmission pillars under Swan River and geotechnical investigation for Uttaranchal hydroelectric power project SJVNL. Thank you, sir. And sir, please. Am I audible? Yeah. Thank you. The chief guest of the today function, Professor Rameswar Singh, Honorable Vice Chancellor of Bihar Animal Science University, Patna. Other esteemed guests, Dr. K.G. Mandal, Director, ICAR, Motihari, Dr. Anjani Kumar, the DDG, Dr. S. Bhaskar, Dr. S.K. Chaudhary, Director of the Institute, Dr. Ujjwal Kumar, other eminent agriculture scientists, officials, employees, a very hearty congratulations on the 22nd Foundation Day of your institute. And any institute, if they celebrate their annual day, it is a time to assess, evaluate, rank, estimate about your performance of the last 1 year and see where you have been positioned right now
from the last year. And I think while going through the proceeding from last 1.5 hours, I have seen that almost all the speakers have appreciated the work done by this institute, that is the regional center, having the greater responsibility to resolve the issues related to the agriculture of this regional level. I think I must also join to congratulate them for their excellent work. The work which has a direct imparting an impact on the human being, because agriculture is related to our Indian civilization. It is one of the oldest, you can say, the industry in Indian system, and next come to this mining sector. So it has, I think, greater impact in the terms of providing food and shelter to this survival of the human being. And if you can see the UNESCO 17th goal, I think first two goal belongs to the agriculture scientist, agriculturist, and the farmer. There is a no poverty and eliminate or erase hunger. How one can achieve these two goals out of the 17? I think without agriculture, we cannot think that there is a no poverty and there is a no hunger on the planet. I think the agriculture has been the foundation of Indian civilization, and now also we have a strong farming system and contributes maximum to gross domestic product and employment in the country since inception. Agricultural production environment, being a dynamic entity, has kept evolving continuously. The present phase of the changes being encountered by the agriculture sector, such as reducing the availability of the quality water, nutrient deficiency in soil, climate change, farm energy availability, loss of biodiversity, engagement of the new pest and diseases, fragmentation of this land in the small holding, you can say, rural-urban migration, coupled with the new IPRs and trade regulation, are some of these new challenges which the agriculture scientists are facing, and they have to resolve it. Let us take the soil, which is I think, very, very important to know and understand about the soil. The way the soil nutrients are decreasing, not only in India, but across the world, which reduce the production and productivity of, or yielding the, you can say, this food grain, is alarming. And we have to think about it, that how we can protect or prevent the loss of this soil. Because once this soil is lost, I think survival of human being is under the great question or under the great threat. It has become from 3% to it is reducing to 0.3%, which is alarming. And I think you people are more capable to understand, and because you all working as a agriculture scientist, one area to the other area. But this is a concern related to this soil nutrient that will be very, very alarming. And that is the reason I think it is the climate is changing. And the climate change has affected more on the soil than the anything from the else. And that is a direct bearing on the agriculture productivity.
So that are the things I think this are the challenge ahead with this agriculture scientists to how to cope up or how to balance between the agriculture production as well as to how to reduce the greenhouse gases which are increasing every year from last 20, 25 or 30 years. If you can see the change in the graph or change in the percentage increase in this carbon on the climate, that will be very, very high, which has been not reached up to this more than the 100 years. And that has direct impact on your productivity of your food grains. There is a huge demand and gap in some of this, you can say, the forecasting related to this agriculture field. Particularly if you can think about the region in which this your center is located, having the greater responsibility to understand about this, the area of this greater Bihar, you can say, some of the part of the Odisha, and all these things where mostly you are dealing with a not a very multiple type of the crop, but you have this rice is dominating over the other crops. Some of these speakers have spoken about these various things related to this Bihar, about the uniqueness, one district, one product. And I'm happy that some of this product, if you can see the geographical indicators, GI tagging of near about 200, near about the 200 plus products, but out of that 1/3 is belonging to this agriculture. This is the very, I think, this or related to agriculture based industry like this. Our first GI tag goes to this Darjeeling tea. Here also we have if you can see this, how the Darjeeling tea GI has came into the existence, and after that there are many agriculture products having the G tag, and that has really helped these farmers or food grower that they can having some amount of, you can say, benefits, economic benefits out of that. I think the state of Bihar having also some of this, you can say, this GI tag in terms of this your lychee, then khaja, then you have this some of this pan, about this some of this the rice types and many more. That this GI has given a very good boost up in the economic front, and I think that this regional center should come forward to having more and more GI products from this state or adjoining state, so that the marketability or the marketplace will be having a lot of a scope to increase the economic status, and by the same time, users also get the product which they like or for which they pay. So duplicacy can be removed, and this law is very, very good in terms of, you can see this out of all this patent, trademark, GI and other. So GI is, I think we have to think that how this center can inculcate this kind of the culture so that you can increase the product, and many products come under the umbrella of, you can say, the GI. And then I think one product, one district uniqueness can be achieved, and which will be the challenge for you. But certainly a technological driven methods can help you to enhance this kind of this technological field. Then we have this how climate smart agriculture one can think, where
a little bit IIT Patna can also contribute and associated with you about this, how we can go to the FAO and we can make some kind of this food and agriculture organization should come to adopt this certain technology so that we have you can say this food security can be achieved. Otherwise, if you can lagging behind in any kind of, you can say, the adaptation of the technology, that will be very, very, I think that will keep us in the backyard. Recently, from last 2-3 days or last 1 week, you can see a lot of discussion about how to use the drone technology for this in the field of the agriculture. And that technology is very, very important because the demand of this drone in this area of agriculture will be huge. But the problem is who can work as an interface, because the use of this drone by the farmers can be only given by the agriculture scientists, because not only the technology. We can provide the technology, we can provide the drone, but the training to the farmers is very, very special things that needs a certain kind of the expert from the agriculture who can help them to for the utilization, because this had the various utilization in terms of the drone. So we have this kind of this training. We are trying to develop our own production, you can say, about this 1 unit of this manufacturing the drone in-house, which is very, very low costing, and that will try to provide to the farmers through you, and a certain kind of the training or understanding or MOU can be signed between these two institutions so that we can help the surrounding people, the regional people, and we can improve their understanding. That will, I think, if we can adopt this will be a major, you can be shift in the thinking, the mindset of the people. And we are talking about the optimization of the use of the natural resources. About this, you can see this water and other things. So that will be, I think, you can standardize or you can make them a optimum of the use of this, you can say this any type of the pesticide or any type of the spray or any kind of this giving a certain kind of the fertilizer for the crop production. Then there is a lot of new technology is coming about this this IoT, artificial intelligence, and these technologies or this kind of the tools and technique that can help for the predictability about this growth of this agriculture, as well as what kind of you can say, if you have this lot of data, and I'm fully agree that a lot of data is available in the agriculture sector that needs to be utilized for to making a certain kind of the trend understanding, pattern recognition, as well as understanding that how it can be utilized to improve the productivity. And that data can be used, and then we can make a trend setting that what kind of fertilizer should be given to a particular soil, or you can say the crop friendly soil or soil friendly crop can be given to this farmer, and they have the choice to understand these things that yes, it is a useful technology. Third one will be, I think there is a market driven, that how this technology can help them to marketing it out, going for the market, about the evaluation of their product based on the quality, because quality is very, very important. Once you are going to this market, people are looking for the quality product. And there is a one
thing has been changed in the last few years, that the people mindset has been changed, that there was earlier people say the cheap, best and cheap. Say product will be low cost, but it has contains all kind of this quality. So that concept has been changed. People are ready to pay for the quality product. So we can ensure through the technology or adopters of the technology that a certain product having this quality and what is this market. So technology can help to search the new market, provide the new market and the new, you can say the buyer for this agriculture product. So that technology, I think we can think about that is the way how people, this concept is a greening growth we can achieve without compromising or disturbing the soil. This, one of the speakers spoken about the how to waste land can be converted to the useful land, particularly in the Jharkhand region and some of the part of the Bihar region, where you have a lot of this mining field, where abundant mine has been left at EG without, you can say, the reclamation of it. And that will be the laying vacant, and sometimes it will be disastrous also. Can something can be done on that area, that it can be reclaimed, and then some of this, you can say, the certain kind of the treatment is required to make this soil a fertile soil, and some kind of this agroforestry or some kind of this fruit production of plants can be implanted there with this greater care, so that that land can be not only increase the greenery, but also give some kind of this, you can say, return to the society, because it is a abundant land having no use, and that can be also create sometimes the threat to the human being or these animals in and around that region. So that we can see how we can go ahead with. This is the new challenge. This is the challenging area, and there are certain technology which is available to identify that land, and that we can see the growth of that land. On that, the sensor-based technology can help you to improve your understanding. We can put certain kind of the sensors and all the information about the moisture content, the nutrient content, and you can say the other soil parameter which is required for you to understand the behavior of the soil with the time. That can be, that kind of the sensors can be developed and deployed at this various field, so that from your office you can give some kind of the advice or some kind of this instruction to the farmer that, yeah, this is the optimum time for you to go for the irrigation, or what is the optimum water is required to that, if that will be achieved. Because if you now need a 30% of this moisture content, and the moment you get the 30% of this water intake on that, so that you can achieve that moisture content or wetness, then immediately we can say that now you can stop putting this excessive water, because once you are putting excessive water, that will be the sheer wastage of your natural resource. So this kind of the experiment has been made in some of this area in the Nasik and other places, in the grape growing field. The people have put the sensor and giving the instruction according to that, and that has been reduced. That tools has reduced the, you can, the utilization of 30 to 40% of the water. Means this every acre of the land is using 40% excessive water. So if you can, you know better than what is the total area of that place and how much excessive water they are using, and by the simple tool of putting a certain count of sensor and providing the information, that has saved a huge quantity of this water, because most of the water is pumped through this from underground, you can say water storage or groundwater exploitation, that has been reducing and depleting the groundwater level. So the earlier it was the drop down was a 1 meter every year, that has been also improved,
by the that methods. So the sensor-based technology we can adopt where there is no need to going to the field, but getting all the information, or you can say the informations which can be continuously you can monitor, you can see, and then you can go ahead with this you can say for you can say the betterment of that. Then we have a digital solution and artificial intelligence for the evergreen, you can say the revolution of that one. We can use the big data analytics. This IIT Patna is a very big way going to adopt this technology. We are providing the trainings to the various people. And if your agriculture scientist, if they are interested, I think with the help of your center, we can organize a certain kind of the training that how this big data analysis can be used for the increasing the production and productivity of this farmer, and also to have a sustainable growth of the ecosystem in the surrounding area. So that are the, I think, if you can go like that, and that will be also attract youth and empowering the women in the agriculture once we can go for this kind of the technology, because many people think the farming is only the means to agriculture. It is not. There is so many other components which start from the understanding the soil to the growing and then going for the market. I think that we can go ahead with this developing the value chain, developing our entrepreneurship in the agriculture field. Then you have this agribusiness management centers. We can go ahead. So means we have to go towards the precision agriculture methods, and then we can go ahead to adopt the technology. Adopting technology is always, you can say, the painful. Many people in the initial stage never accept any kind of the technology, forget about this good and bad about it. But adaptation of technology will also create some kind of the heat, and people are a little bit afraid to adopt that technology. But once we can make them to understand that it is a useful, and it will be the cost saving, time saving, and it will be the right information you can get in the right time, so that you can act on this right direction to have your a good production of this agriculture area. Because without increasing this kind of this, you can say this awareness or environment, it is difficult to, I think, to achieve this Government of Indian goal about to how to increase the economic status or earning of these farmers in 2 times or 3 times. So without you can going, then we have a certain issue where some of the things are stuck up in terms of the intellectual property issue, which is very, very important. So how we can make a very easy approach and take a participation of the farmer if he is involved in any kind of this IP, and he or she should also get some kind of the incentive once the IP is generated. It should not be the institution or the person or scientist, but it should go also some of the shares from IP to the farmer, where we are or we are supposed to do the certain kind of the experimentation and taking the help of the farmer. I think this kind of you can mindset we can create, so that we can get a greater confidence and a good cooperation from this farmer. And I think that will be a better management, you can say, and participation in terms of getting this idea, because many a times they have the very good idea, and that idea can be translated into the reality. I think where this a gap exists, and that gap should be bridged by the only the agriculture scientists, and then we can go how we can go ahead with that one. So I think
there's a lot of scope to have a certain kind of, you can say, the adaptation of technology. And then, of course, you have there is a possibility of this protection of this IP or the knowledge. And I think we have to adopt the certain technology to attract a very good, you can say, the students in the area of agriculture. On that also, we should be hybrid certain things which are in this, you can say, the indigenous technological knowledge, PTK, ITK. So that will be also a very good thing, not to completely rule out these traditional things, but how we can improve it, how we can add the value addition on that. That will be, I think, a very, very important, and then we can go about it, because the traditional knowledge having no replacement, only we have to boost up a certain kind of things, particularly in the Jharkhand region or Chhattisgarh region. In this, our tribal belts, a lot of knowledge is available there. But that knowledge has been not testified on the laboratory scale. Methodology should be adopted, because they have used practice, and by the practice they have the perfect understanding about this product, but they don't know in between what is the mechanism. So that things can be also taken into that, this how the traditional knowledge can be preserved, and it can be also modified wherever there is a need. And that will be the technology, I think we can go ahead. Then only we can, I think this, and that there is some challenge about this, the land holding is decreasing. So how this can we go for the PPP mode, triple P mode, to acquire a certain land of this, and they go for some kind of this farming, we can make this local is a vocal product like that, and that kind of the thinkings. So not this one district, one product, but I think agriculture scientists should be thinks in a advanced way, that one village, one product movement, so that I think we can achieve this greater goal of the India. And then if you want, and we wish to want, and everybody is wishing that yes, India will be going to be this world leader, then I think the agriculture scientists should think beyond that, the one district to one village, one product. And I think that will be the ideal situation. And then we can go ahead with all kind of things. So these are this, I think, challenges I can foresee in terms of this improving the agriculture, because without agriculture, I think we don't have a happy, you can say, this model for survival across the world, I can think. Because without food, one cannot survive. Whatever the technological advancement we have, we can have a certain kind of the food grain to feed the need of the people. And the science and technology will be a very good tool, a very efficient tool, very appropriate tool to give certain kind of boost up, accelerate the things where the time and this money both can be saved, and we can economize our product and provide in an appropriate rate without compromising the quality, if you can go to resolve a certain issues related to it. So I think I have tried to just give you some views, being a non-agriculture researcher or non-agriculture student. So that will, my views maybe look sometimes odd, but that I think that was my thinking about how this agriculture
sector can grow to adopting, accepting, and practicing the science and technological tools which are developed for the benefit of the society and the country. I am thankful to director who has given me this opportunity to express my view, because many of the places the subject experts are called for the foundation day lecture, but Dr. Kumar has advised me that no, you can give this this lecture, and I was a little bit hesitant that what I should speak about it, but because I think in India, where everybody is agriculturist, whether they are doing the agriculture either in their small pots in their flat, or going for the small farming or the bigger farming. So with that, I have got some of the idea and I have expressed in front of you. So once again, wish you a very, very happy and Foundation Day. I congratulate all these who are going to receive the various awards for their achievements. And I wish that this institution will grow leaps and bounds in this coming year, and you can fulfill the dream of the farmers to increase their economic status, provide food, quality food to all the users, and as well as the dream of this political system who wish to make this farmer happy. So once again, thank you very much for giving this opportunity and time and your patient hearing. Thank you very much. Thanks a lot, sir. For being a non-agriculture person, you have delivered a marvelous foundation day lecture covering all the agricultural aspects. So please give him a big applause. Practice said that adoption of technology by farmer is the need of our, and the use of drone technology in the field of agriculture in coming days, it is very important. And then right information at right time, market-driven technologies are some of the important aspects. And once again, I will be thankful, sir, for offering an opportunity to provide support to this organization for betterment of the farmers. And we will like to have a close cooperation with IIT Patna, sir. So thanks a lot, sir. And now it's time for release of publication and award ceremony for the best workers. तो आज हम अपने इस कार्यक्रम में कुछ पब्लिकेशंस जो है यहाँ से प्रकाशित हुए हैं, उसका अभी विमोचन करने जा रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि और जितने भी अतिथि गणमान्य अतिथि हैं, उनके द्वारा हम कुछ पब्लिकेशंस अभी विमोचन करेंगे। तो सबसे पहले जिसका विमोचन होना है वो है एक बुलेटिन है, इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर बोरो राइस कल्टीवेशन इन ईस्टर्न इंडिया, और जिसके ऑथर दत्ता जी को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी डेस्क पे, जिनके ऑथर है नारायण दत्ता। दूसरी प्रसार पुस्तिका मेरे पास, गेहूं में उच्च तापमान तनाव का प्रबंधन, और इसके जो आलेख और प्रस्तुतिकरण है वो रचना दुबे एक और प्रसार पुस्तिका है सर हमारे पास, और वो है भारत के पूर्वी क्षेत्र के लिए उपयोगी फसल बुआई एवं रोपाई यंत्र।
यह जो प्रसार पुस्तिका है ये CRP ऑन फार्म मैकेनाइजेशन एंड प्रेसिजन और रंजीत खिरवार, डॉक्टर सुंदरम प्लीज आ जाइए, राम केवल, पवनजीत एवं आशुतोष उपाध्याय सर के द्वारा किया गया है और मार्गदर्शन डॉक्टर उज्जवल कुमार सर का है। बहुत बहुत बधाई। आप सबों को बहुत बहुत बधाई और सर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद विमोचन के लिए। और अब घड़ी आ गई है जिसका आप सबों को इंतजार होगा, बहुतों को इंतजार होगा, बेस्ट वर्कर अवार्ड का। सही कहा गया है, श्रद्धा से ज्ञान, नम्रता से मान और योग्यता से स्थान मिलता है। और यदि ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। तो अभी ये सम्मान की घड़ी है कि हम अपने जितने भी स्टाफ है जिनको आज बेस्ट वर्कर अवार्ड मिलना है उनको बधाई देते हैं। और मैं अभी नाम पुकारूंगी, प्लीज आकर आप यहाँ पे अपना अवार्ड ग्रहण करेंगे। सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन कैटेगरी से बुलाना चाहूंगी श्री कमल कुमार लाल को। ये सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी है हमारे संस्थान के, श्री कमल कुमार लाल। बहुत बहुत बधाई हो आपको। तालियां बजती रहे तो मजा आता है, लेने वाले को भी और देने वाले को भी। बहुत बहुत बधाई हो। दूसरा है श्री दयानंद प्रसाद, AAO श्री दयानंद प्रसाद। और इसके बाद मोहम्मद साजिद मुस्ताद भी तैयार रहेंगे अपना अवार्ड ग्रहण करने के लिए। दयानंद प्रसाद ये AAO है हमारे कर दो ना, बंद कर दो बिल्कुल, ऑफ कर दो। कर
सही तो नहीं होता। बिल्कुल भाई जाते हैं। आगे खत्म।
अब मैं आग्रह करूंगी अपने माननीय विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि डॉक्टर रामेश्वर सिंह सर से कि वे अपने आशीर्वचन हमें आज के दिवस में धन्यवाद। थैंक यू मैडम। नमस्कार। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ नहीं सके, लेकिन उन्होंने मैसेज दिया। डॉक्टर चौधरी, DDG NRM, फाउंडेशन डे लेक्चर के लिए डॉक्टर TN सिंह साहब हमारे बीच में, यहाँ पर डॉक्टर उज्ज्वल, डॉक्टर मंडल, डॉक्टर ठाकुर और ICAR हेडक्वार्टर से मेरे साथी डॉक्टर भास्कर, डॉक्टर JS मिश्रा जी और दूसरे डायरेक्टर्स जो अन्य संस्थानों से जुड़े थे, डॉक्टर अंजनी, डायरेक्टर अटारी, सभी हेड ऑफ डिविजन्स, श्री पुष्प नायक जी, all learned scientists, staff of this institute, ladies and gentlemen, सबको मैं पुनः 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सबने मुझे इस अवसर पर यहाँ आने का न्योता दिया और मुझे काफी कुछ, जैसे हर बार मैं आता हूँ, नई चीजें जरूर सीखने को मिलती है। आज भी बहुत सारे बिंदु मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा और इस शुभ अवसर पर अपने पुराने परिवार, मूल रूप से मैं भी ICAR परिवार से ही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे एक अतिथि के रूप में संबोधन करते में मुझे खुद इससे हिचक होती है कि भाई हम अतिथि हैं या हम परिवार के सदस्य हैं। अभी भी हैं, इनके साथ मैंने काम किया। डॉक्टर चौधरी उस समय ADG थे, भास्कर साहब के ADG थे। अपनी ब्रीफ में प्रस्तुत की, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। आपने यहाँ की जो वाटर की स्थिति है, क्लाइमेट रेजिलिएंट जो राइस की वैरायटीज आप लोगों ने डेवलप की हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि स्पेसिफिक हैं, जो बहुत स्पेशल है यहाँ के लिए, जैसे आपका मखाना है, ये वाटर चेस्टनट है, और भी कुछ रीजन स्पेसिफिक चीजों पर आपने काम किया है, तो वो उसके लिए आप लोग सब बधाई के पात्र हैं। और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आज बहुत सारे साथियों को प्रोत्साहित किया गया, उन्हें रिकग्नाइज किया गया। मैं इस रिकग्निशन पाने वाले सभी साथियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। 22वां हमारा चल रहा है और जल्दी ही आपकी सिल्वर जुबली आने वाली है, तो अभी से प्लान कर लीजिए कि सिल्वर जुबली पे क्या धमाका करना है, किसने खूब धूमधाम से मनाइएगा। अभी तो कोरोना खत्म हुआ है और ये पहली बैठक है जिसमें हम ऑफलाइन में शिरकत कर रहे हैं इस वेव के जाने के बाद। अभी रिलैक्सेशन हुई है, इन रिलैक्सेशन के मद्देनजर अब आना जाना शुरू हुआ है और मुझे खुशी है
कि मैं भी यहाँ पर आप लोगों के साथ फिजिकली बैठ करके आपके बीच में आकर के बहुत उत्साहित और बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंडेट बहुत बड़ा है। कहने को ये संस्थान एनआरएम डिवीजन से जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि केवल मैनेजमेंट एस्पेक्ट से ही एनआरएम का पार्ट आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट का मैंडेट है। और उसमें जैसा भास्कर साहब कह रहे थे कि एनआरएम टेक्नोलॉजीज को कमर्शलाइज करने में, दूसरी उनको ठीक से उनका जो पर्सपेक्टिव है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको लोगों को समझाने में एक दिक्कत आती है। वो कहीं सॉइल की बात करते हैं, कहीं वाटर की बात करते हैं, कहीं क्लाइमेट की बात करते हैं, जिनमें डायरेक्ट हाथ में प्रोडक्ट नहीं होता है, जिनमें प्रैक्टिसेस और जिनमें सोच बदलने की, कल्चर चेंज करने की बात है। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में तो आप लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन आप कोर एरियाज में जिनमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, वैरायटी डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है और इंटरवेंशन है, उनमें भी आप बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और अपना दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि चारों तरफ 360 डिग्री अप्रोच के साथ आप चल रहे हैं, चाहे उसमें क्रॉप साइंस हो, चाहे उसमें हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे एनिमल साइंस के कंपोनेंट्स हो, ये सब आपका दायित्व है। लेकिन मैं देखता हूँ कि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो उस मैंडेट के अनुरूप नहीं रखे गए हैं, और इसके भी कई कारण। बहुत सारी हमारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे हमारे दूसरे संस्थान आईसीआर के ही खुद के इस क्षेत्र में हैं। तो ये पूरा कंप्रीहेंसिव तरीके से इसको देखना होगा कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे पूल कर सकते हैं, कैसे हम कोलैबोरेट करके आपस में मिलजुल करके इसको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जो एफर्ट्स हमारे चल रहे हैं। और मैंडेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे फ्लैगशिप एरियाज क्या है, मुख्य जो चुनौतियां हैं, मुख्य प्रायोरिटीज जो हैं वो मैंने पीएचडी एक्स एरिया में की थी, तो मैं अपना नया प्रोजेक्ट उसी में ले लूँ, या मुझे फला टेक्नोलॉजी में मैं ठीक हूँ, कंफर्टेबल हूँ, तो मैं उसी पर रहूँ। वो अप्रोच जो है हमें एक मल्टी, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कहते हैं, या एक सॉलिड सॉल्यूशन किसी विषय पर देना है, उसमें काम आने में शायद कमी रहेगी। तो हम बॉटम ड्रिवन के साथ साथ टॉप ड्रिवन अप्रोच भी रखते हैं कि मंथन करके अच्छे से पूरा अपना एक कुछ फिक्स करना होगा हमें। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इसमें कुछ किया भी है, और जरूर आप और भी चीजें आप लोग कर रहे होंगे। ये रीजन जो है, ये जैसा भास्कर साहब कह रहे थे कि भाई बैकवर्ड एरिया माना जाता है, पॉवर्टी रिटर्न है, अभी भी जो है इशू बना हुआ है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, बैलेंस्ड राशन, अच्छी हेल्थ, ये सारी चुनौतियां हैं। और प्रदेश की सरकारें विभिन्न राज्यों में इनमें सख्त प्रयास कर रही हैं। जितनी चुनौतियां हैं, मैं कहूँगा कि उन्नति के अवसर भी उतने ही ज्यादा हैं। जहाँ पर भी हम लोग पीछे हैं, वहाँ गैप को कवर करने में हमारे पास बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी हमें मालूम है कि हम ये यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज हमें मालूम है कि ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ा करके उस गैप को जो बाकी लोग हमारे से पहले कर चुके हैं पूरा हम करेंगे। लेकिन कंस्ट्रेंट्स आते हैं, जैसे लैंड होल्डिंग की बात है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी की बात है, स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग की बात है, चकबंदी नहीं हुई, कंसोलिडेशन नहीं हुआ, आप टेक्नोलॉजी इंफ्यूज नहीं कर सकते, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन कृषि पर अभी भी आ रही है। हमारे जो रूरल पॉपुलेशन है यहाँ पर वो 89% के आसपास, तो मेजोरिटी खेती में ही है, 10% छोड़ दीजिए अगर उसमें से, तो 70% से भी ऊपर हमारे जो पॉपुलेशन है टोटल, खासतौर से बिहार स्टेट की, वो कृषि पर ही आधारित है, जो कि फ्रेगमेंटेड है, जिसमें नेशनल एवरेज से हमारी प्रोडक्टिविटी कई मायनों में नीचे आती है, और जितना हमें लाभ मिलना चाहिए, एफिशिएंट हमारी एग्रीकल्चर होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं काफी गुंजाइश। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑक्सफोर्ड का डेवलप किया मॉडल है, रिसेंटली इसकी रिपोर्ट आई है। तो बिहार के 12 जिले तो ऐसे चिन्हित किए गए हैं, उसमें जिनकी जो पॉवर्टी इंडेक्स में 60% से ज्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी इंडेक्स में,
according to those 12 parameters which have been taken up by this model. उसमें हेल्थ भी है, न्यूट्रिशन भी है, एजुकेशन भी है, ह्यूमन डेवलपमेंट के 12 इंडिसेस हैं और पूरे प्रदेश का देखेंगे तो 50% पॉपुलेशन में करीब 51.3% और समथिंग एग्जैक्ट फिगर आप लोग देख लीजिएगा। तो ये अभी भी एक चुनौती बना हुआ है, जबकि हमारी अगर पिछले 8 साल की जीडीपी की ग्रोथ रेट देखते हैं तो जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 10 से 12% के आसपास नहीं बैठता है। कभी 8% भी रहा जो न्यूनतम, लेकिन 15% भी रहा है। अभी रिसेंट हमारा 15% के आसपास चल रहा है, आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे। और जीडीपी जो है पिछले 8 साल में 2.5 गुना हो गई। इसी तरह पर कैपिटा इनकम जो है वो 2.15 टाइम्स बढ़ा है। तो ग्रोथ इज देयर, पोटेंशियल है, उसके हिसाब से ग्रोथ चल रही है, लेकिन इसको कहीं और आगे ले जाने की जरूरत है। प्रदेश सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स में देख रहा हूँ कि कृषि रोड मैप, आप लोग बिल्कुल परिचित हैं सभी लोग, किस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है कृषि रोड मैप की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम प्रदेश ने बनाई। और 7 निश्चय पार्ट 2 में एनिमल हस्बेंड्री को, एग्रीकल्चर को, हर खेत में पानी, इस तरह की स्कीम्स जो है चल रही है। जल जीवन हरियाली, ये मिशन जो है काफी हमारे लिए अहम है। इसमें हमारे वाटर रिसोर्सेज खासतौर से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हमारा इकोसिस्टम पूरा उसको इसमें डेवलप करने की बात है। चाहे बिहार विकास मिशन के कार्यक्रम हो और आप लोग भी भागीदार हैं इसमें, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट CRA, इसमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पर खास रूप से बहुत ध्यान दिया गया है। तो ये इश्यूज के होते हुए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। राज्य सरकार काफी उत्साहित है और बहुत अच्छा सहयोग राज्य सरकार से हम ले सकते हैं और ले भी रहे हैं कई चीजों में, लेकिन उसको और बढ़ाया जा सकता है। मैं यहाँ कुछ गुंजाइश देखता हूँ कि बोरलोग इंस्टीट्यूट और दूसरे छोटे इंस्टीट्यूट जो हैं वो इस मामले में थोड़े और तेज हैं और हमारे से कई बार अच्छा जो है तो उनका तालमेल मैं देखता हूँ कि मिलता है, या कुछ ऐसे फ्लैगशिप प्रोग्राम लेकर आते हैं जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी स्टेट में होती है। मुझे खुशी है कि वो भी हम लोग सभी मिलकर के काम करें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। नेशनल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी एक बात है कि हमारा मॉडल जो है स्मॉल होल्डर, छोटे किसान, चाहे जमीन कृषि की बात हो चाहे पशुधन की बात हो, 2 जानवर 5 जानवर 3 जानवर रख के लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। अब क्या इसमें एफिशिएंसी लाई जा सकती है, इसकी प्रोडक्शन सिस्टम की, कैसे एनिमल्स की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं, कैसे उनकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं कि वो पूरा राशन उनको मिले जानवरों को, जो कि एक बहुत बड़ी चैलेंज है। नए रिसोर्सेज आ रहे हैं, आपने एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सर डेवलप किया, आपने बहुत सारे फॉरेस्ट वैरायटीज को प्रमोट किया। आपके फार्म पे मैं आता रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि कैसे कैसे आपने नेपियस घास और दूसरे मक्खन घास और पेरिनियल ग्रासेस को इसमें लिया है। तो क्या हम समुचित न्यूट्रिशन अपने पशुओं को दे पा रहे हैं और किसानों को गाइड कर पा रहे हैं? उनकी फर्टिलिटी, जिसको हम कहते हैं रिपीट ब्रीडिंग या एन स्ट्रेस की जो कंडीशंस हैं फील्ड में, वो बहुत ज्यादा है। हमारे पास इतने रिक्वेस्ट आती हैं अभी भी कि आप कैंप लगाइए, आप अपनी टीम भेजिए। अभी डुमरांव में हम लोगों ने कैंप लगाया, उसमें करीब 180 एनिमल्स हमने भोजपुर और डुमरांव दोनों जगह एक ही दिन में 2 टीमें भेजी। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यही सब प्रॉब्लम आ रही थी कि अच्छा सीमन अवेलेबल नहीं है, AI सर्विसेज में दिक्कत है और हमारे जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसमें प्रॉब्लम। तो बातचीत हुई कि कितना जो 3 बार से ज्यादा बार रिपीट कर रहा है एनिमल, उसी को हम रिपीट ब्रीडर मानते हैं, या एनिस्ट्रस जो अभी एक बार भी हीट में नहीं आया उसको एनिस्ट्रस मानते हैं। तो बहुत बड़ा लॉस इस तरह का रहता है। बड़े फार्म्स पे इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, सिंक्रोनाइज्ड ब्रीडिंग की जा सकती है, टाइम बाउंड AI सिस्टम लगाया जा सकता है, लेकिन स्मॉल होल्डर के साथ में ये सारी इंटरवेंशंस के लिए हमें पॉलिसी देखनी पड़ेगी। कैसे पॉलिसी? क्या लोग हॉल्स्टीन की तरफ जाएं जिसका
फैट 3%, 3.5% से नीचे है, इसका टोटल सॉलिड भी कम है। आप पानी ज्यादा चाहते हैं या दूध ज्यादा चाहते हैं, वो ब्रीड आपको देखनी पड़ेगी। आप भैंस का देखिए तो 7.5%, 8% फैट भी रहेगा और टोटल सॉलिड भी ज्यादा रहेंगे। आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मिल्क सॉलिड वो भी घटेगा। आपको प्रोसेसिंग में जो एनर्जी लगती है वो भी घटेगी। आपकी जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, चाहे आपका पनीर हो, चाहे मिठाई हो, चाहे मिल्क पाउडर हो, उसकी जो एनर्जी कॉस्ट है और दूसरी चीजें हैं वो भी कम। तो लॉन्ग टर्म पे हमें किस तरह की ब्रीड्स को अपने लाना है। हैवी ब्रीड्स हैं, उनका रखरखाव भी ज्यादा चाहिए, मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम है, दूसरी डिजीज की प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन डिजीज की प्रॉब्लम, मिल्क फीवर है या और कुछ है। तो मेरा कहने का ये है कि हम स्मॉल होल्डर के लिए सोचें कि कैसे उनको कौन सी ब्रीड सूटेबल हैं और वो किस तरह का इंटरवेंशन कर रहे हैं। आप बड़े शहर के आसपास हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप इंटीरियर में हैं तो क्या ऑप्शन है। आप फैट और एसएनएफ के हिसाब से होम फैट को पैसा देंगे, होस्टीन का दूसरे लो फैट और लो सॉलिड वाला अगर आपका दूध रहेगा तो आप कितना उसको रेट ले पाएंगे, ये भी एक सवाल। आपने महंगा जानवर भी खरीदा, उसकी देख रेख भी की, लेकिन आपको पेमेंट जो है वो उसी के बेस पे हो रहा है। तो दोस्तों, स्मॉल होल्डर जो मॉडल है उसमें मैं समझता हूँ कि 3 स्पीशीज हमारे पास या 3 टाइप के एनिमल्स, सॉरी 5 हमारे स्तंभ है। उसमें कैटल है, उसमें बफलो है, उसमें गोट है, उसमें पोल्ट्री है और फिशरी। इन 5 चीजों पर अगर ध्यान देंगे तो जो हमारा आईसीआर बात करता है या हमारा देश बात करता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी की जाए या बढ़ाई जाए, तो ये 5 चीजें बहुत कारगर मानी गई हैं। दूसरे डाटा भी आ रहे हैं कि जितना लाभ एनिमल हस्बेंड्री में हो रहा है या जो ग्रोथ एनिमल हस्बेंड्री में, पोल्ट्री में, फिशरी में आ रही है, वो क्रॉप साइंस के मुकाबले ज्यादा है। क्रॉप साइंस में टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन ऑलरेडी काफी है। एक टेक्नोलॉजी फटीग जैसी बात भी लोग करते हैं, सॉइल की लिमिटेशंस की भी बात होती है, लेकिन एनिमल साइंस में, एनिमल हस्बेंड्री में, लाइफ स्टॉक सेक्टर में अभी भी काफी पोटेंशियल बचा हुआ है। इस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए जैसे मैंने कहा कि हम प्रायोरिटाइज्ड वे में रिसर्च करें, अपने प्रोजेक्ट्स लें, अपने एक्सटेंशन एक्टिविटीज को फोकस करें। उसके लिए मैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको इनवाइट करता हूं कि जितना आप प्रगाढ़ कोलैबोरेशन हमारे साथ करना करेंगे, प्रदेश को, हमारे विज्ञान को उतना ही लाभ होगा और हम आपके साथ इसमें कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने को तैयार। जो स्ट्रेंथ है इसको हम और मजबूत करें, 1 और 1 11 या 2 और 2 22 बनाकर चलें। आज 22 तारीख है, 22वां फाउंडेशन डे है, इसको देखते हुए ये ध्यान में आई बात। तो हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन, हम अजोला की बात करते रहते हैं। मैं फील्ड में देखता नहीं कि भाई अजोला कितना पहुंचा, कहाँ कहाँ अजोला फीड किया जा रहा है, किस मात्रा में किया जा रहा है, कितना इसका टोटल हुआ, मोरिंगा का क्या स्टेटस है। हम बहुत बात करते हैं कि मोरिंगा में इतना इतना न्यूट्रिएंट्स है, कितना लोग अपना रहे हैं और नहीं अपना रहे हैं तो क्यों नहीं अपना रहे हैं, क्या कॉन्स्ट्रेंट्स के ऊपर बात हुई है, ये टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन क्यों नहीं हुआ, तो इसमें बॉटलनेक क्या है, उस बिंदु को एड्रेस किया जाए जिससे कि ये बहुत अच्छा फीड है, बहुत लाभ पहुंचाता है, लेकिन कहाँ गाड़ी अटक रही है उसको देखा जाए। तो पिन पॉइंट करना होगा, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो जिसको हम लैब में या फील्ड में या इंस्टीट्यूट लेवल पर अच्छा मान रहे हैं और किसान के खेत तक नहीं पहुंच रही है, उसके डोर तक नहीं पहुंच रही है, या किसान के पास ले जाने के बाद भी किसान उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर हमारा कौन सा बिंदु है जिसे हम हटाएंगे या जिसे हम एड्रेस करेंगे तो वो चीज हमारी आगे जाए। दूसरा चीज आ रही है क्वालिटी। अब देखिए सबका ध्यान जो है न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है, लोगों की पॉकेट, लोगों की इनकम, जैसे हमने कहा पर कैपिटा इनकम भी 2-2.5 गुना हो गई है पिछले कुछ साल में। महंगाई भी लगा लें तो भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट, आप लिविंग स्टैंडर्ड से अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीब आदमी या हमारे यहाँ भी जो लोअर स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, आज उनके भी जीवन स्तर में बहुत वृद्धि हुई और उनके यहाँ भी अवेयरनेस आ रही, टीवी
ऐसी चीज हो गई है, मोबाइल ऐसी चीज हो गई है कि नई से नई लेटेस्ट चीजें ऑनलाइन स्टोर से और इनसे सबको विजिबल है। उनका भी मन होता है कि भाई हम भी ये सब चीजें लें, हम भी खरीदें, हमारी पहुंच में भी आए, अच्छा प्रोटीन हम लें, अच्छे सप्लीमेंट्स लें। इम्यूनिटी बूस्टर्स की तो रोज ही ऐड आ रही है, कितने इम्यूनिटी बूस्टर खाइए, कितना क्या क्या करिए, तो लोगों में अवेयरनेस हुई है। इन्फेक्शियस डिजीज को रोकना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है, हाथ धोना है, तो स्वच्छता की तरफ है। अब क्लीन मिल्क प्रोडक्शन की बात होती रहती है कि क्लीन मिल्क प्रोडक्शन कैसे हो फील्ड में, तो खाली बाल्टी धोना, थन धोना और सफाई रखना एनिमल्स के साथ, उसकी बजाय अगर देखा जाए तो हमारा पर्सपेक्टिव है स्वच्छता अभियान। जब तक स्वच्छता अभियान का कल्चर पूरे उसमें जहन में नहीं बैठेगा पशुपालक के, वो केवल अपनी गौशाला में सफाई नहीं करता, घर में खुद साफ रखेगा, पहले अपना ध्यान रखेगा, अपनी सफाई का, अपने वातावरण का, अपने घर का, तभी उसके कल्चर में ये चीज आएगी कि वो दूध भी हमें उतनी गुणवत्ता का, उतने अच्छा तरीके से साफ जो है स्वच्छ कंडीशन में करके दे, उसमें ड्रग रेजिडू ना हो, उसमें माइक्रोवेव लोड कम हो, उसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी हो, उसमें ऑफ फ्लेवर्स ना हो, और जो दूध हम ले रहे हैं वो गुणवत्ता हो। आज लोग पैसा देने के लिए क्या है, अच्छी प्रोडक्ट्स का, अच्छे दूध का, लोग 50 रुपए से लेके और 200 रुपए लीटर तक दूध खरीद रहे हैं। कोई किसी क्वालिटी के नाम पे खरीद रहा है, कोई कुछ, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो मैं कहूँगा कि मीट प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्शन, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे अदर न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास मेज है, क्या हम कितना साइलेज बना रहे हैं प्रदेश में, कितने फार्मर इसको यूज कर रहे हैं, कितना हम क्यूपीएम लगा रहे हैं, उससे क्या हमारी प्रोटीन की अवेलेबिलिटी एनिमल्स की बढ़ रही है, और साथ साथ हमारे जो इंटीग्रेटेड मॉडल्स, ये कहाँ तक हमारी इनकी एक्सेप्टेंस, इनमें क्या सुधार की जरूरत है। हर फार्मर अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है, शुरू में मैंने डबलिंग फार्मर इनकम की बारे में की तरफ इशारा किया था। तो इंटीग्रेटेड जो खेती है उसमें हम पूरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इनकम को रेगुलर बेसिस पे भी ले सकते हैं और कंसोलिडेटेड वे में भी ले सकते हैं। साल में जो क्रॉप आएगी वो भी आएगी, लेकिन रोजमर्रा का जो इनकम है वो भी उससे सुचारू रूप से हमें मिल सकता है। तो आप लोग इन पे सब चीजों पे काम कर रहे हैं। इसी तरह फिशरीज में है, सीड का इशू है, फीड का इशू है, वैरायटी का इशू है, आपकी प्रोसेसिंग की बातें हैं, मार्केटिंग की हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ, इनमें काफी पोटेंशियल मुझे नजर आता है कि हर चीज पे हम इंटरव्यू करें। अभी प्रिमिटिव स्टेज में है, सीड की अभी भी बंगाल से जरूरत पड़ रही है, वहां से भी क्वालिटी सीड नहीं मिलता, सीड की आपूर्ति नहीं होती। सीड में किस तरह से हम जो टेक्नोलॉजी लेड सिस्टम्स को लेके आ सकते हैं कि कुछ कोई लोग सिर्फ सीड सप्लाई का काम करते हैं, अच्छी क्वालिटी सीड का काम, उसके बारे में अवेयरनेस पैदा करें। कोई भी फिंगरलिंग लिया और छोड़ दिया और डाल दिया, तो शर्मा जी बैठे हुए हैं, और ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इससे जितना अभी लाभ हुआ है प्रदेश में फिशरीज में डेवलपमेंट होने से और दूसरे फीड की टेक्नोलॉजी को अपनाने से, वो कहीं ना कहीं हमें आगे लेकर जाएगा। दूसरा, जैसे गुजरात मॉडल है हमारे पास, अमूल का मॉडल है, कोऑपरेटिव सेक्टर से एक कॉर्पोरेट, बड़े कॉर्पोरेट हाउस में कन्वर्ट हो गया। आप दूसरी जगह पहुंच रहा है, अपने राज्य से बाहर निकल रहा है, देशों में विदेश में कंपटीशन कर रहा है। तो क्या हम अंडे में, मीट में और कृषि उत्पादों में इस तरह के मॉडल ला सकते हैं? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात हम कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प मिशन की बात कर रहे हैं, और भी काफी चीजें हम लेकर चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आप लोग भी सहमत होंगे। और मैं अधिक समय नहीं लेना चाहूँगा, बहुत लंबा सेशन हुआ है और लास्ट में बोलने में एक जो ग्राह्यता है, एक्सेप्टेंस है, वो कहीं ना कहीं थकान की वजह से कम हो गई। तो आप लोग भी, कसूर नहीं है, आप लोगों की दिक्कत नहीं है, ये सब की दिक्कत है। मैं भी खुद समझ रहा था कि कितना अपनी बातें रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा बैठे बैठे जो है। तो ये
है थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन देखिए गोट की, और डिमांड मार्केट में आप कितना ही गोट पैदा कर लीजिए बिहार में, आपको मटन का रेट पूरे देश में सबसे अव्वल रेट यहाँ मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि ऑर्गेनाइज गोट फार्मिंग, तो यूथ को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? देखिए आगे टाइम क्या आ रहा है, अब कुछ साल के बाद आपको परिवर्तन लगेगा। मैं पिछली जनरेशन की बात नहीं कर रहा, मैं अपने समय में ही देख रहा हूँ कि समाज कितना बदल गया, उसकी आवश्यकताएं कितनी बदल रही, उसके प्रोडक्ट्स कितने बदल रहे हैं। अभी 1 मिनट में आप ऑर्डर कर देते हैं ऑनलाइन पे कोई चीज, आपको चाहिए कि मिनिमल प्रोसेसिंग करें किचन में, कम से कम टाइम दें, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हो, लॉन्ग सेल्फ लाइफ हो, टेस्ट ऐसा हो, न्यूट्रिशियस हो, उसकी सारी चीजें उसमें लोग देख रहे हैं। तो ये हमारी जो ICAR के इंस्टीट्यूट हैं, हमारा यहाँ इंस्टीट्यूट है, इस बात पर भी सहमत होंगे कि हमें टेक्नोलॉजी में भी ये चीजें लानी होंगी जो पब्लिक की डिमांड, जो पब्लिक में आ रही है। फीड में है, हम बाहर से सोयाबीन फीड खरीदते हैं, वहां से GMO भी आ रहा है, मुझे पता चला कि रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई शायद GM सोया खरीदने के लिए, मील खरीदते, तो हम अपने यहाँ तो नहीं पैदा कर सकते, उसमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंट और वो है, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट नहीं है, जबकि तिलियां मर जाएंगी या और चीज मर जाएंगी, खरपतवार को हम वैसे भी हटाते हैं। तो क्या हम अच्छी फॉडर वैरायटीज, चाहे वो लूसन हो, अल्फा अल्फा हो, या आपकी सोयाबीन जैसी प्रोटीन रिच क्रॉप्स हो, उस पर हमें रीथिंकिंग करनी है। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो, रिसोर्सेज चाहिए, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं? हम कितनी स्पीड से ऑर्गेनिक की तरफ जा सकते हैं, कितनी स्पीड से नेचुरल की तरफ जा सकते हैं? क्या हमारा प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा, क्या प्रोडक्शन का लॉस होगा? 3 साल झटका खाएंगे, 4 साल खाएंगे, या कितने टाइम के बाद हमारी प्रोडक्टिविटी उस लेवल पे आएगी जिस पे हम करें? कैन वी अफोर्ड टू डू दिस? श्रीलंका ट्राइड, we all have heard about it, how the experiment has gone there, and what lessons we have learned. So we have to keep an open mind. Animal husbandry again can help in providing the organic fertilizer in a number of ways, but I will not say magical properties. We know what are the contents, how much organic matter is there, how much benefit it will give. It is not something medicinal which we are adding to our foods. It may be desi, it may be videsi. Gobar should be good quality, processed in a good compost, maybe vermicompost or simple compost, and utilize it in the best manner. Don't go by emotional ways. Market is very ruthless. They want efficiency, they want affordability, they want good products at competitive prices. We cannot stop Australia, America from opening our markets in coming days. This is what I am expecting. We need technology, we need many things from them. They will bargain. How long we can resist? If we increase our custom duties, if we keep on protecting our sector by not making it efficient, but putting barriers, then a day will come that we will be rendered ineffective, inefficient, and non-competitive. So we have to keep this thing in mind that if we are to go forward, open our gates to the international competition, we must address those points. So friends, once again, I congratulate all of you and thank Dr. Ujjwal and all of you for giving me this opportunity. I am also enjoying this day, and this is a very happy day for me and all of you. My dearest congratulations to all. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये तो जाहिर है सर कि जब कभी भी हमने आपको याद किया है, आपने सहर्ष अपनी सहमति दी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे परिवार के सदस्य देते हैं। तो सर जस्ट आपको मान सम्मान प्रदान करने के लिए यहाँ पे अतिथि बनाया गया। आप ICAR के ही सदस्य हैं सर, थैंक यू सो मच। और ये सही है कि टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे बहुत सी है, लेकिन वो सक्सेसफुली हमारे किसान भाई अडॉप्ट नहीं कर रहे। सर ने बहुत सारी बातें बताई हैं, महत्वपूर्ण बातें, दिशा निर्देश दिए हैं, और सर हम लोग जरूर उस पर अमल करेंगे। और
सर ने कहा जैसे समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं, तो इस विषय पर हमारा संस्थान कार्य कर रहा है, चाहे वो फिश बेस्ड हो या क्रॉप बेस्ड हो, हॉर्टिकल्चर बेस्ड हो। यहाँ पे मॉडल्स भी बन रहे हैं और हमारा संस्थान ये कोशिश भी कर रहा है कि जितने भी किसान हैं उनको हम यहाँ जो भी तकनीकें बनाई जा रही हैं उन तक पहुँचाएं, ताकि वो उसे अपनाएं और उसकी आय दुगनी हो। तो इस तरह से मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने ICAR परिवार से आपको धन्यवाद देती हूँ। और अब मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय विभागाध्यक्ष स्तर से कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। प्लीज सर। आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, कुलपति बिहार चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। आज हमारे DDG भी जुड़े हुए थे, तो डॉक्टर SK चौधरी साहब जो उप महानिदेशक हमारे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के हैं, डॉक्टर भास्कर साहब थे। यहाँ पर हमारे डॉक्टर अंजनी कुमार जी, डॉक्टर ठाकुर साहब, डॉक्टर मंडल जी, डॉक्टर उज्ज्वल जी और जितने भी हमारे आज संस्थान के अधिकारी कर्मचारीगण, आज हमारे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि हम लोग आज स्थापना दिवस 22वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, वो भी 22 फरवरी 2022 को। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर सबके विचार सुने, बहुत ही आनंद आया। हमने एक साल की उपलब्धियों पर चर्चा की कि हमारे संस्थान के वैज्ञानिकों, कर्मचारियों, अधिकारियों ने क्या एक साल में पाया है, अपने आप का आकलन किया और ये भी सोचा कि हमें क्या खामियां रह गई थी और उन खामियों को कैसे खूबियों में बदला जाए। तो मुझे याद आती है कुछ 4 लाइनें कि हजारों ऐप हैं हमने, नहीं कोई हुनर बेशक, मेरी खामी को तो खूबी में यूं तब्दील कर देना, मेरी हस्ती है खारे समुंदर सी मेरे मौला, तो अपनी रहमतों से इसको मीठी झील कर देना। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जो भी खामियां हैं वो आगे चलकर खूबियों में परिवर्तित हों। हमने जो भी तकनीकियां विकसित किए हैं, जो भी हमने योगदान दिए हैं, वो योगदान हमारे वैज्ञानिकगण, हमारे कर्मचारी, अधिकारीगण सभी मिलकर अपने समेकित प्रयास से उसको आगे बढ़ाएं। आज के दिन हमें हमारे विशिष्ट अतिथि लोकनाथ सिंह जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हमारे डॉक्टर रामेश्वर सिंह साहब का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम उनके अनुग्रहित हैं कि उन्होंने सहर्ष हमारे विनम्र निवेदन को स्वीकार किया और अपने विचारों को व्यक्त किया। हमारे जितने भी वैज्ञानिक, अधिकारी, कर्मचारीगण हैं उनको उन्होंने प्रोत्साहित किया। हम आज इस संस्थान में आए हुए समस्त विशिष्ट अतिथियों एवं जितने भी लोग हैं, जो पत्रकार वगैरह हैं, जो भी लोग आए हुए हैं, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में भाग लिया है, मैं सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और एक